Okay, welcome back students. We have already discussed the cell structure and its organization and the main key points regarding the cell in the previous lecture. Okay, so basics were already being discussed. Now we are moving to the brief description of the chapter. Okay, so first we will see the kinds of the cell. Yes, we have already seen the cell, but cell is also having a different kind. So mainly cell is divided into two parts: prokaryotic cell and eukaryotic cell. We have already discussed in the last chapter, that is prokaryotic and eukaryotic. Simply we know that the main characteristics of prokaryotic is it don't have a well defined nucleus, and eukaryotic cell it has a well defined nucleus. Another point to differentiate is it has a simple structure and it has a complex structure. Generally prokaryotic जे cells असतात, prokaryotic cells जे असतात त्यांचं स्ट्रक्चर जे असतं अगदी सिंपल असतं. जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिझम जे असतात त्यांच्यामध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल्स अवेलेबल असतात, and eukaryotic cells जो है we are the best example of the eukaryotic cell. It has a complex structure, उसके organelles का structure complex होता है. Everything is complex in eukaryotic, and prokaryotic has a simple structure. Okay, so we will discuss the more points. What is actually the prokaryotic? We have already know the main points. Prokaryotic and eukaryotic में differentiate हम कर सकते हैं, but prokaryotic के key points क्या हैं? How it is organized, इसका organization कैसा है? Each and everything we will discuss in this topic. Okay, so it has a simple cellular organization. Cellular organization cell का जो setup होता है, it is mostly simple according comparison with the eukaryotic cell. Eukaryotic cell से अगर हम इसका comparison करेंगे तो it has a simple organization. It has a chemically complex protective cell envelope. Now from this point we will look what ये जो prokaryotic cell है, you can see on the blackboard, ये जो prokaryotic cell है, it has a chemically complex protective layer. एक केमिकल की प्रोटेक्टिव लेयर होती है which is called as a cell envelope. सेल का उसको envelope बोलते हैं. It is an outer layer. What? Chemically protective layer present on the outermost side of the prokaryotic cell. It's called as a cell envelope और capsule. उसको जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, it is also called as a capsule and it is chemically protected. Okay. Now the organelles does not have a well-defined nucleus. We have already discussed prokaryotic cells does not have well-defined nucleus. उसका nucleus कहाँ पे है हम उसका पता नहीं लगा सकते, या nucleus होता ही नहीं है, अगर होता है तो totally develop नहीं होता है. Okay, we will discuss in the diagram. Okay, you can see generally cell का हम अगर diagram देखते हैं तो it has a nucleus around the center, not proper in the center, but center के near about एक nucleus होता है. But prokaryotic cell में हमने nucleus नहीं दिखाया है because it don't have the proper well defined nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में. बट प्रोकैरियोटिक सेल में अगर न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं है तो क्रोमोसोम जो होंगे वो डायरेक्टली स्विंगिंग क्रोमोसोम होंगे. दैट्स व्हाई हमने डायरेक्ट क्रोमोसोम दिखाए हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं दिखाया है. ओके, ऑर्गेनल्स डोंट हैव द मेम्ब्रेन्स. ऑर्गेनल्स जितने भी सेल के अंदर जनरली वी हैव सीन, वी हैव नो दैट, एक अगर सेल की बात करेंगे तो सेल के अंदर देयर आर लॉट मोर ऑर्गेनल्स like as mitochondria, plastids, vacuoles, nucleus, endoplasmic reticulum. उसमें भी स्मूथ हो सकता है, उसमें भी रफ हो सकता है. lot more organelles are present inside the cell, but इसके अंदर भी सेल के अंदर ऑर्गेनल होंगे, but it don't have the layer or the membrane bound नहीं होंगे, free flowing होंगे. यूकैरियोट्स में membrane bound रहेंगे. Okay, now the envelope has 3 layers. एनवलप जो होता है इसका हमने बताया है कि सेल को एक केमिकली बाउंडेड एनवलप होता है. दैट एनवलप हैज 3 लेयर्स. outermost layer is made up of glycocalyx. You have to note such points. It may be asked in your examinations. Okay, so question आपको arise हो सकता है कि as we know that
that, as we know that the prokaryotic cell has the outermost layer made up of chemicals, which is called as a cell envelope or cell capsule. Okay, and that layer is made up of three layers. That is the outer layer. Outermost layer is made up of glycocalyx. Middle layer जो होती है, it is a cell wall. It is a cell wall, and inner layer जो होती है, that is the plasma membrane. You can see in this diagram, it is the outermost layer. Okay, outermost layer it is a capsule. उसके अंदर एक cell wall है. इसके अंदर you can see the cell membrane. So these are the three layers. outer layer जो होंगी एक किससे बनी होंगी, that is made up of glycocalyx. Okay, so three layers are there. Simply अगर बात करेंगे तो three layers are there in the prokaryotic cell. outermost layer जो होती है वो एक कैप्सूल होती है, केमिकल कवरिंग होता है, which is made up of glycocalyx. middle layer cell wall होती है, उसके अंदर जो layer होती है, that is the cell membrane or plasma membrane. Next, gram staining is given by, look for this, स्टेनिंग. सेल को स्टेल करने का माइक्रोस्कोप पे अगर हम उसको देखना है तो उसको स्टेन करना पड़ता है. दैट थ्योरी वाज गिवन बाय द हैंस क्रिस्टियन क्रेम्स. इसके बारे में आपको टेक्स्ट बुक में आगे देखेंगे. ओके, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकॉन. नाउ लुक, थ्री लेयर्स आर देयर, outermost, middle and inner. outermost लेयर जो वो ग्लाइकोकैलिक्स से बनी है. middle layer जो है cell wall is made up of peptidoglycan. So I can note down that cell wall is made up of peptidoglycan. Correct, cell wall is made up of peptidoglycan and cell membrane is made up of phospholipid. Look, don't get confused. बघा इथे confusion होऊ शकतं. That's why सेल एनव्हलप, सेल का जो एनव्हलप होता है, बाहेरची जी लेयर असते तीन लेयर्स मध्ये आहे, आउटरमोस्ट लेयर, मिडल लेयर आणि इनर लेयर. आउटरमोस्ट लेयर जी आहे त्याला कॅप्सूल म्हटलं गेलं आहे किंवा त्याला एनव्हलप म्हटलं गेलं आहे. ओके, आउटरमोस्ट इज द एनव्हलप, मिडल इज द सेल वॉल अँड इनर इज द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ह्या तीन लेयर्स आहेत. तिन्ही लेयर्स वेगळ्या वेगळ्या मटेरियल पासून बनलेल्या आहे. आउटरमोस्ट लेयर जी आहे इट इज मेड अप ऑफ ग्लायकोकॅलिक्स. middle layer, that is cell wall, is made up of peptidoglycan, and inner layer, that is the plasma membrane, which is made up of phospholipid. Okay, got it? One more time, quick review. What are the three layers? Outer, middle and inner. Okay, outermost layer is known as the cell envelope or a cell capsule. Middle layer is known as the cell wall and inner layer is the plasma membrane. Correct. Now what, which material, किस material से outermost layer बनी है, that is the glycocalyx. middle जो बनी है, that is the peptidoglycan, and inner जो बनी है, that is the plasma membrane जो बनी है, that is the phospholipid. Got it? Quick review. Okay, now cell membrane. Okay, correct. Movement is by the cilia और flagella. बताने की जरूरत नहीं है. सेल की जो मूवमेंट होती है cilia से होती है, flagella से होती है. करेक्ट, मूव करने के लिए उनके लेग्स का काम करते हैं. आफ्टर दैट द अदर पार्ट्स आर फिलामेंटस एंड हुक्ड. सेल में जो अदर पार्ट्स होते हैं वो फिलामेंट्स होते हैं या हुक शेप के होते हैं. फिलामेंटस मींस अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और हुक्स या सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ हुक स्ट्रक्चर्स. हुक्स जैसे इट इज अ फिलामेंटस एंड हुक शेप. कहीं पे लटकने का काम होगा या मूवमेंट का काम होगा या कुछ फिलामेंट्स के थ्रू सेंस करना है, सेंसेशन लेना है, तो इट इज डन बाय द फिलामेंटस. एंड हुक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका काम होता है टू हैंग और हुकलिंग. ओके, नेक्स्ट, पीली और पिलाई helps in intercellular communication. Now look, where is the pili? Yes, these are the pili. In your textbook also diagram given. If it is not clear, you can see in your textbook also. Pili helps in intercellular communication. Pili जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में अगर कम्युनिकेशन करना है तो इट इज डन बाय दिस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज पिलाई. फिमरी इन क्लिंगिंग सपोर्ट जो हुक शेप्ड होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं है, हुक शेप जो
अवेलेबल होते हैं इस सेल पे, दे आर नोन एज हुक, म्हणजे हुक सारखे सेल लटकण्यासारखे. ओके, फिम्ब्री एंड इट हेल्प्स इन अ क्लिंगिंग सपोर्ट. कहीं पे लटकना है या कुछ चीज को अटैच होना है तो दैट इज डन बाय द फिम्ब्राई और फिम्ब्री. नेक्स्ट मेसोसोम्स helps in a cell wall formation, cellular respiration and DNA replication. Mesosome is a liquid present inside this prokaryotic cell. Prokaryotic cell के अंदर एक liquid material होता है which is known as a mesosomes and it helps in a cell wall formation. cell की wall की formation जो होती है it is by mesosomes. cellular respiration most important function cell का जो respiration होता है it is also done with the help of mesosomes and DNA replication. DNA का replication, duplicate मतलब वन से एक से दो, replication मतलब number of times DNA जो होता है वो circulate होता है immediately. So all of these functions are carried with the help of mesosomes. Okay, and last one that is the ribosomes helps in a protein synthesis. Simple सा टॉपिक है. राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं here you can see the structure, small structure बहुत सारे होते हैं. Here I have mentioned the ribosomes. और बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है आपने 10th में भी पढ़ा है. Okay, so that is done by the ribosome. So it is the whole structure of the prokaryotic cell. Simple cell organization असतं यामधलं. Okay, so it has a different characteristics. Simple organization it has. Next point, chemically bound एक layer होती है which is called as a cell envelope or a capsule. Okay, that layer is further divided into three parts. That layer is further divided into three parts: outer, middle, and inner. Outer is the cell envelope, middle is the cell wall, and inner is the cell membrane. All these three layers are made up of different materials. Outermost just the layer that is made up of glycocalyx. Middle layer that is the cell wall is made up of peptidoglycan, and the inner layer plasma membrane is made up of phospholipid. Okay, prokaryotic cells don't have the definite nucleus, that's why its chromosomes is swinging होते हैं. Okay, cellular is made up of all these points. Yes, movement is done by the cilia or flagella. Generally prokaryotes मध्ये cell ला legs सेल्सची जी मुवमेंट असते बाय मुवमेंट्स आपल्या बॉडीमध्ये पण सेल्स आहे पण त्या मुवमेंट करत नाही. ओके, मुवमेंट करतात बट इट इज बाय द अनदर मटेरियल. ओके, जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो असतात दे आर यूनिसेलुलर एंड यूनिसेलुलर मतलब सिंगुलर जो होता है वो टोटल ऑर्गेनिज्म होता है. दैट्स व्हाई that cell must be moved from one place to another place and that movement is done by with the help of cilia or flagella. Other parts like filaments and or other parts जो होते हैं filamentous होते हैं या hook shaped होते हैं. Now villi, these are the villi helps in the cellular intercommunication. एक सेल से दूसरे सेल को जो communication करना है that is done by this villi. Next fimbri, it is a clinging support hang करने के लिए. Mesosomes होता है it perform three main functions that is the cell wall formation, cellular respiration and DNA replication. All this done by with the help of mesosomes. And last one that is the ribosomes which helps in a protein synthesis. Make a quick review. Try to try to arise the new questions in these MCQs. Short answer, characteristics, different type of question you try to arise and try to solve it. Okay, thank you so much. I hope you understood it.